usually what happened, we usually read the drug from the textbook in the extent कि जैसे वहां पे लिखा है हम उसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. Might be we develop the picture of particular remedy, right? Or we can understand the drug through the rubrics also. Barabar. But the important thing again, we have to add in our knowledge, or we have to learn each remedy through their development, through how that remedies evolve. Because every evolution of every remedy is different. But why they behave like this, or why that lady or that personality or that particular remedy goes into the psychosis or syphilitic. So there is always a journey. Like there is a journey of disease, journey of the life of individual person. वैसे there is a journey of the remedy, which start from the sora and it develop to psychosis and then syphilis. Might be the person or the patient comes to us at the particular stage. That doesn't mean the कि हमको हमने अगर एक फेज ही पढ़ा है कोई रेमेडी का तो हमको वही फेज पे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए. बिकॉज अगर हम सेपिया का सिर्फ इंडिफरेंस ही याद रखेंगे और सिर्फ हम इस यही समझेंगे कि सेपिया मतलब इंडिफरेंस, मतलब इंडिफरेंस है तो सेपिया देंगे नहीं तो नहीं देंगे, then it is the limitation to our knowledge. Because if we understand the sepia thoroughly and if we understand the sepia journey, how it start and how it develop, how it goes from hypersensitivity, ambitious, hardworking woman to the indifference, or before the indifference, how it develop the stasis or slowness. Barabar, what are the factors which land up that person into that state? That we called it as a elements from or the causation. Because in the previous session also, when we discussed the nitrum group, and we have seen that how that nitrum goes into the shell, how that nitrum personality goes into the introvertedness, and what are that factor where the sensitivity is getting hurt. Because we have already discussed that once the sensitivity is hurt, then the problem started. Or when sensitivity hurt, when sensitivity injured, then there is a turn, might be from the sora to psychosis or from psychosis to syphilis. Right? So there is a change in the personality or change in the state of mind. More than the personality, we can say the change in the state of mind. Right? So the person who is responsible, sensitive, caring, like a nitrum self, goes into the suicidal thought and suicidal tendency. Why and how? We have discussed in the last. In the same way, what I wish that we should understand the every remedy. So that we can catch the patient in any phase of that remedy. मतलब हो सकता है कि नाइट्रम सल्फ हमको एक सोरिक या सोरा साइकोटिक फेज में मिले, जरूरी नहीं कि सिफिलिटिक फेज में मिले. तो वैसे हमको सेपिया को पढ़ना है. And if we want to understand any remedy, we should first understand the source of that remedy. What are the source of the remedy? From how the remedy prepared. बराबर है कि नहीं? वो कहाँ पे है, कहाँ से मिलता है? Then we can correlate the doctrine of signature also, which is most of time it is very valuable in order to understand the person. Not necessary every time कि symptoms देखना है, patient का repertorization करना है और remedy prescribe करना है. The understanding the doctrine of signature is also very important to prescribe the remedy. And that we can do even without repertorization.
right? So we can see, understand the sepia, try to make the be alert. सेपिया कटलफिश, हाँ बोला ना, आवाज कशाला आहे? So sepia cuttlefish is not actually a fish. When we say the sepia, it is called as the cuttlefish. So when cuttlefish name, it indicates there is a fish because it comes because it is uh, live in the sea, in the water. बराबर है कि नहीं? But it is not actually a fish. It is a mollusc. It is like a bizarre alien. It doesn't looks like a fish. जैसे फिश का शेप होता है. It is certain bizarre creature जो दूसरा नहीं है कोई. And it's called as the king of camouflage. Why it is called king of camouflage? Because it has the power, or the god has given one peculiar quality to change the color or to change the appearance, to change the shape and blend with the seaweeds and the searock at will. मतलब अपने इच्छाधारी नाग जैसे बोलते हैं ना, जो मूवी में देखते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन, वैसे ये इच्छाधारी मोलुस्क है या एनिमल है, बराबर है, या क्रिएचर है, बराबर है कि नहीं? वो अपने मन से, देयर आर द सर्टन chromatophores, when active, color change, or it has the power to eject the some ink where the वो अपने आसपास के जो पानी है उसका भी कलर चेंज कर सकती है in order to save from the predators. So it has the ability to change its color and shape and blend with the seaweeds and searocks at will, अपने इच्छा से. It changes its colors through the 20 million chromatophores. And to control such a large number of the cells, chromatophores, one require really a sophisticated and large brain. मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि वो क्रिएचर कितना चालाक है और हैविंग द गुड ब्रेन, है ना? मतलब उसका अपने ब्रेन के ऊपर कितना कंट्रोल है ना? It has the biggest head in the cephalopods, though it is invertebrate and large body. It is called as a invertebrate and it looks like this. Most of the people, I think, don't know how cuttlefish looks in the sea. हमको इतना पता है कि इंक से सेपिया बनता है, कटलफिश से. हम शायद जब ग्रेजुएशन में हमको ये इमेजिन करते हैं कि शायद फिश जैसे कोई शेप होगा. सो हम डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते, बट in order to understand that remedy thoroughly, we have to go depth so that we can understand each and every aspect of that remedy. Right? This is the cuttlefish. This is an independent creature. Why it is called independent? It doesn't depends on the other animals. Or it is not even in the group में नहीं रहते, independent रहता है. So this gives rise to the quality that the sepia is the independent lady. There is a sense of independence is more predominant in the sepia, like even the nitramure. So which swims alone, rather than in a group. मतलब भीड़ में नहीं रहता है या भीड़ में स्विमिंग या नहीं तैरते हैं. And lives in the crevices of rocks. जो रॉक्स के जो डिप्रेशंस या ऐसे डिप्रेस पार्ट रहते हैं उनमें रहते हैं. It does not have anything to fight out of battle. मतलब उनको लड़ाई के लिए कोई ऐसा
उनके पास कोई औजार या कोई ऐसा चीज नहीं है। जैसे आपने देखे होंगे ना, खेकड़े जैसे बोलते हैं, खेकड़ा, खेकड़े के पास कैसे रहते हैं ना, ऐसे विंग्स रहते हैं, आर्म्स रहते हैं, इन ऑर्डर टू फाइट विद द प्रीडेटर, है ना। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, बट गॉड हैज गिवन some quality, hence he has been endowed with good primary defense mechanism, and that defense mechanism is presence of camouflage. That's why means it's changing the color by using pigments from chromatophores, right? So it has the quality to change the color. जैसे कलर चेंज कर देगा, अपना अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, तो जो अटैक करने वाला है वो भ्रम में पड़ जाएगा, है ना, भ्रमिष्ट हो जाएगा कि मैं किसको अटैक करने वाला था कर, है ना। मतलब वो रॉक अगर है वहां पे, तो रॉक में अगर लाई ऑन दैट, तो इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ दैट रॉक, मतलब होल रॉक, मतलब रॉक से अलग नहीं दिखेंगे, मतलब रॉक का कलर, जो रॉक का कलर है वैसे ही कलर वो बन जाएगी कटल फिश। सो इन दिस वे this cuttlefish save herself or himself from the predator, right? The body internally has the hard cuticle, which is useful for protection and buoyancy. It has the 8 arms, that means 4 pairs of arms in the male and 3 pairs of arms in the female, and 2 tentacles with suckers mouth at their ends. Suckers, matlab mouth. It looks like this if you see the anatomy of the cuttlefish. Large head is there with large brain. If you want to see the in the sea, we can अपन YouTube से देख सकते हैं, जैसे कैन यू सी दिस, arms, 3 pairs of arms, 4 pairs of arms. Even you can see the characteristic eye, डब्ल्यू शेप आए, बराबर है कि नहीं, या और कोई एनिमल्स में ऐसे नहीं देखा जाता। और आई का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अरे यार, हाँ, आईज का, आईज का कैरेक्टरिस्टिक इसमें आईज का कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है इसमें, ये देखिए। तो eyes of the cuttlefish are the very unique. How? They have the smooth W-shaped pupils. That means it appears like a half close, as if drunken. और कोई सोते हैं ना half close during sleep, उस तरह से दिखता है। मतलब लोगों को लगता है या दूसरे एनिमल्स को लगता है ना, कि वो सो रही है, बट ही शी इज अलर्ट एंड अवेक, बराबर है कि नहीं। She cannot differentiate directly the color, but the color can be perceived through the polarization of light. This is the special quality they possessing. They develop the polarization of the light, which enhance their perception of the color or contrast. Right? अभी eyes का देखो, they have 2 spots of concentrated sensor cells on their retina, known as the foveae. One to look more forward and one to look more backwards. मतलब वो अपने लेंस से पीछे भी देख सकती है और आगे भी देख सकती है। मतलब हम जैसे पीछे का हमको देखना है तो हमको बैकवर्ड मूवमेंट करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ दिस कटल फिश और सेपिया, मतलब सामने अगर उसका हेड है, फिर भी वो पीछे कौन आ रहा है और कौन है, साइड में कौन है, वो देख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ द लेंस।
दैट्स वाई इवन ये कटल फिश क्या करती है, आगे भी मूवमेंट कर सकती है, दैट इज आगे अपनी आंखें जैसे फ्रंट में रहती है, तो हम आगे चलते हैं, हम पीछे नहीं चल सकते ना, पीछे चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सेपिया क्या करती है, उतने ही स्पीड से पीछे भी आ सकती है, बिकॉज इट हैज द पावर टू move the lens the backward so that he can look or he can see the back image। जैसे गाड़ी में रेयर गाड़ी में अपने कार में कैमरा होता है ना, बैक कैमरा, बराबर है, तो हम रिवर्स अच्छे से ले पाते हैं, तो ये भी रिवर्स मूवमेंट भी कर सकती है। So the eye changes focus by shifting the position of the entire lens with respect to the retina instead of reshaping the lens as in the mammals। बराबर है, बाकी इसमें रीशेपिंग करना पड़ता है। Therefore, the sepia can change its side from front to back and move backwards with the equal efficacy। बराबर है कि नहीं? It can move backwards with the equal efficacy, right? So this is the quality of sepia. How we can understand through drugs or the remedy, we will see. It is the color king of the deep. I will produce the fantastic color that already demonstrated. How the reproduction does, है ना? How reproduction does. This is also very peculiar in the this cuttlefish or the sepia. The process of reproduction or the process of selection. Most important is the process of selection of mate of opposite person. बराबर है कि नहीं? Male sepia fight each other for females. One who wins is allowed to mate। बराबर है कि नहीं? देखो मतलब फीमेल फीमेल को पाने के लिए मेल जो सेपिया होते हैं, वो एक में से फाइट करते हैं कि बा मुझे चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो जो फाइट में जीतता है ना, वो उसको ये फीमेल सेपिया एक्सेप्ट कर लेती है। Now, during this challenge, no direct contact is usually made. The animals threaten each other until one of them backs down and swims away। It is not कि डायरेक्ट, है ना, जैसे बाकी जानवर देखते हैं ना, बिल्ली कुत्ते या गाय भैंस डायरेक्ट कांटेक्ट में या वायलेंट हो जाते हैं, इसमें ये नहीं, ये बोलते हैं कि they only threaten, both animals male both males threaten to each other until one of them, अगर कोई टीममेट रहा या अगर कोई ऐसे उसको लगा कि नहीं मैं नहीं पाऊंगा इससे अपोजिट पर्सन से, तो बैकफुट ले लेता है, और जो बैकफुट ले लेता है वो हार जाता है। इवेंचुअली द लार्जर मेल कटलफिश मेट विद द फीमेल बाय ग्रैबलिंग देम विद देयर टेंटाकल्स, टर्निंग द फीमेल so that the two animals are face to face, then swing a specialized tentacles to insect the sperm sacs into an opening near the female mouth। बराबर। द मेल देन गार्ड द फीमेल अंटिल शी लेज द एग्स ऑफ योर्स लेटर, मतलब वो मेल का फिर काम रहता है कि उसको प्रोटेक्ट करो, बराबर है। अभी इसमें भी है कि नॉट अ सिंगल मेल जो जीत जाता है उसमें ये फीमेल उसको चूज करती है। इट इज नॉट लाइक दैट। द थिंग इज दैट फीमेल कटलफिश विल मेट विद द सेवरल मेल्स, शी मेट विद द सेवरल मेल्स, not a single males, storing the sperm and later on to fertilize the eggs with। अभी ये अभी मेट तो काफी इससे होता है ना, से कांटेक्ट तो काफी मेल से होता है, मतलब सबके एग्स ले लेती है, सॉरी स्पर्म ले लेती है, पर फर्टिलाइजेशन एक ही पर्टिकुलर मेल सेपिया से पर्सन से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कैसे चुनती है? द फीमेल विल मोर ऑफन चूज द मेल दैट एम्प्लॉयड दिस मेटिंग ट्रिक एंड दिस शोज द कि जो ज्यादा बलवान है या ज्यादा स्ट्रांग है या उसको लगे ये ज्यादा स्ट्रांग है, उसको उसका स्पर्म वो सिलेक्ट करती है और फिर फर्टिलाइजेशन करती है। सो दिस इज हाउ ट्रैकफुली दिस सेपिया बिहेव इन द मेटिंग or in the fertilization process or in the process of reproduction। This may be an adaptation in order to select the greater intelligence। बराबर है कि the person who is
मतलब जिसका स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है मस्ट बी हैव द ग्रेटर इंटेलिजेंस, तो दे हैव द चॉइस. दैट्स व्हाई शी मेट विद द different मेल, and then finally she choose, right? So this is the way the sepia reproduction happened. sepia has the three heart, बराबर है, वो एक ही रहता है, but this cuttlefish have the three heart, one for the left side of the body, one right side of the body, and one for the rest of the body. थ्री हार्ट मतलब थ्री अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए डिवाइडेड होते हैं. हमारा हार्ट पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना, पूरे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे कटल फिश में वैसा नहीं है, बराबर. राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग तीन हार्ट है, बराबर है. अभी तीन हार्ट है तो क्या हम, हाउ विल डिराइव सम ट्रेड्स बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस. अभी तीन हार्ट है तो हो सकता है, so we mostly see the three hearts in the sepia. We the genetic traits of the sepia we derive through the, when we emphasize on the heart, head and brain, mostly it acts on this. The sepia, the drug, most having the affinity on this, all this aspect of the body, organ or system, right? In human, the heart is on the left side, and that is not an accident. It is not accidental कि हमारे इसमें हार्ट लेफ्ट साइड में रहता है. क्यों लेफ्ट साइड में रहता है? ह्यूमंस आर सपोज टू बी सेंसिटिव इमोशनल बीइंग, और लेफ्ट साइड shows more emotional and sensitivity, because their heart is supposed to rule the mind. मतलब हमारे इंसान में, ह्यूमन बीइंग में हार्ट लेफ्ट साइड होता है, that indicates that the peoples are more emotional and more sensitive than the animals, बराबर. देयर हार्ट इज सपोज टू रूल द माइंड, मतलब ये भावनाएं माइंड को रूल करती है, इंटेलिजेंट को रूल करती है, बराबर है कि नहीं? सो वर्किंग एंड प्रैक्टिकल साइड इज द राइट साइड बोलते हैं, और लेफ्ट साइड जो होता है वो इमोशनल और सेंसिटिव साइड होता है, राइट? जो राइट साइड होता है, द पर्सन हु इज राइट साइडेड, और ब्रेन डोमिनेंस भी आप देखेंगे कि राइट साइड मतलब लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस, एंड लेफ्ट साइड मतलब राइट ब्रेन डोमिनेंस. So the peoples who are the working and practical peoples are the right-sided. That means they are left brain dominance. And the peoples who are emotional and sensitive are the left-sided. They are the right brain dominance. We should know the brain dominance and their characteristic and qualitative features. Here, what in the sepia we see through this, what we have to understand in the sepia. Here in sepia, the working side, that is the right, has nothing to do with the sensitive side left. The large brain is meant for the mechanical control. That means you can see the right side is more predominant in the sepia. बराबर है. So it is not the emotional, it is the working and practical side which is the right side. The large brain is meant for the mechanical controls only, not the emotional. अब ये राइट और लेफ्ट में क्या, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, और क्या क्या अदर क्वालिटीज रहती है. मतलब राइट ब्रेन डोमिनेंस मतलब क्या होता है, और लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस मतलब क्या होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अभी राइट ब्रेन डोमिनेंस मतलब ये राइट ब्रेन एक्टिव है किसका, दैट मीन्स हाउ वी से the peoples who having the right brain active or right brain dominance, this type of peoples are very creative people, very imaginative people, artistic people. They like to draw, they are like a painter, है ना, artistic. They are very sensitive and poetic, spiritualistic. These are very hysterical and having the lot of illusion and delusion in their personality. These are the right brain dominance people. मतलब इनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता
अभी लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस, जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, ऐसे पीपल कौन से हैं? These personalities are very analytical personality, very logical, very practical, and very positive. Positive outlook towards the life, and very decisive people, very high confident people. All these personality having the metal qualities. They are work oriented people, very industrious, and having the very calculative. He has the money oriented and wants the power. बराबर है, दे आर द वेरी इंडस्ट्रियस, मतलब हार्ड वर्किंग पीपल्स रहते हैं कौन से? लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाले पीपल. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस पीपल का क्वालिटी ये है. अभी लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. राइट, ये हमको तो पता है ना, क्रॉस कनेक्शन है करके. तो इसमें कभी अगर पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है तो राइट ब्रेन में, तो लेफ्ट साइड पैरालाइज होता है ना. यहाँ पैथोलॉजी डेवलप हुआ है लेफ्ट में, तो राइट साइड पैरालाइज. राइट, तो वैसे ही राइट ब्रेन डोमिनेंस अगर है तो क्या क्वालिटी अलग है ना, और लेफ्ट ब्रेन है तो क्वालिटी अलग है. लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाले थोड़े प्रैक्टिकल, पॉजिटिव और हार्ड वर्क रहते हैं, मनी ओरिएंटेड रहते हैं. बट राइट ब्रेन डोमिनेंस वाले ज्यादा इमोशनल, आर्टिस्टिक, सेंसिटिव और हिस्टेरिकल टाइप के रहते हैं. दैट मीन्स when we study the Matra Medica, right brain dominance indicate by the left-sided remedy. The drugs which having the left-sided affinity having the right brain dominance, because there is a criss-cross connection. And the drug which having the right-sided affection having the left brain dominance. Try to understand this criss-cross connection. You always see the most of the hysterical remedy starting from the sepia, starting from the ignitia, platina, natrum mur. All these are the left-sided drug. All these left-sided drugs are the mostly a very sensitive, oversensitive. In the contrast, if you see the right-sided drug, where there is a left brain dominance, right-sided drugs are the metals like alumina, auramate, argentum nitricum. These peoples are very hard worker, dominating, very practical, analytical. These peoples are very positive, high level of confidence with the business and money oriented. Like a business oriented कौन से drugs है? Briaria, Apis, Lycopodium, Pulsatilla. So all these are, you can see the right sided drug. Apis, Briaria, Lycopodium. Arsenic, positive drug. Naxomica, right sided. बराबर है. Take a screenshot of this. This is very important to see in the patient and understand the brain dominance in the person. ये मतलब वो कौन सा ब्रेन डोमिनेंस का पर्सनैलिटी है, राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड. This is the miasmatic journey of the sepia. We will see the triamiasmatic Matra Medica. In that we can see the all these things. If you see the sepia, after she born with the very mild, temperate person, slightly anxious in nature. In the soric stage, that sepia child is sensitive to lot of things, like sensitive to music, sensitive to drug, even sensitive to high potency, sensitive to cosmic energy, sensitive to energies. How we can understand the sensitive to energy? The change in the energy in the environment. These peoples are even sensitive to that level. मतलब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है जहाँ पे, वही पॉजिटिव एनर्जी है. मतलब कोई अगर टेम्पल में जाता है जहाँ पे
टेम्पल में क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, इट अफेक्ट्स इफ इट इज अ सेपिया पर्सनैलिटी, इट अफेक्ट्स the change in the energy also affect the sepia. Sensitive to noise, sensitive to pain, sensual impression, where there is a quick gratification is required, sensitive to order of the food, and even sensitive to strong domination from others. These are the sensitivity. These are the soric features of the sepia. This is inborn feature. Inborn है, बराबर है, ये मॉडिफाइड हो सकता, सेंसिटिविटी विल नेवर चेंज, द एक्सप्रेशंस ऑफ द सेंसिटिविटी विल बी चेंज डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन पैथोलॉजी, मेंटल स्टेट और द माइजम, बराबर है। अगर कोई सेंसिटिव टू नॉइज है तो नॉइज थ्रू आउट देयर लाइफ सेंसिटिव टू नॉइज रहेंगे, बट रिएक्शन टू दैट सेंसिटिविटी में चेंज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। व्हाट does brain dominance indicate? What does brain dominance indicate? मैंने बोला ना, राइट ब्रेन डोमिनेंस, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस। अभी पेशेंट इंडस्ट्रियस है, मतलब सेपिया, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द सेपिया हु इज द इंडस्ट्रियस, वेरी पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, इंडो, बट एट द सेम टाइम इंडोलेंस एग्रावेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम है, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, केयर बिजनेस अबाउट है, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर और लॉस ऑफ एम्बिशन टू मेक मनी, एलिमेंट्स फ्रॉम इवन द ड्रीम्स ऑफ बिजनेस है, ऐसी पर्सनालिटी है। तो ये पर्सनालिटी कौन से ब्रेन डोमिनेंस में जा रही है, राइट और लेफ्ट? You can see these are the left brain dominance. Left. बराबर है कि नहीं? These are the left brain dominance remedy. We again we see this is very important chart, right and left brain dominance. Left brain dominance are very positive, very logical, analytical, hardworking, but at the same time very money oriented and require a power. They are a strong person who is intolerance of contradiction. They like to work hard. They are industrious. These are the left brain dominance, right? So if you see this is not given in any book. This is our understanding, and even this is the understanding by Dr. Praful Vijayakar sir, where when we had done the SCPH and SCPH plus course, they taught us this insight. They taught us some different views of that, how to understand that remedy in different angle. Understanding just the symptomatology and mug up is not suffice. बराबर है कि नहीं? So we can look that remedy in this aspect also, right? The all features that SEPIA indicate is indicate the left brain dominance. Again, there is a social position concern about despair of social position, selfish, egoistic, and fear to lose is lucrative position. All this, ये क्या रहता है? ये जितने भी सिम्टम्स है, इमोशनल सिम्टम्स नहीं है ना, ये इंटेलेक्चुअल है सब। पॉजिटिव होना, इंडस्ट्रियस होना, मनी ओरिएंटेड होना, बिजनेस ओरिएंटेड होना, ऑल दीज आर द प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल ये है। एंड ऑल दिस गोज टू प्रूव दैट in sepia mind rules the heart. Mind rules the heart means intellect is more predominant than the emotions. जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, इमोशनल रेमेडी, कौन सी इमोशनल रेमेडी? इग्नेशिया, लाइक नाइट्रम म्यूर, इमोशनल है। क्यों हम इमोशनल बोलते हैं? वहां पे इमोशन से इंटेलेक्ट को डोमिनेट करता है, मतलब इमोशन इज मोर प्रीडोमिनेंट देन द इंटेलेक्ट. Why we say in sepia nitrum like drug, even the sepia love, मतलब love to wrong person or run away with the coachman, with the servant, है ना? केंट ने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया लेक्चर्स इन मैथमेटिका में
कि ये इग्नेशिया लाइक ड्रग हैज द इमोशनल प्रीडोमिनेंस, इसलिए वो इंटेलेक्चुअल सोचेंगे नहीं कि क्या होगा, बराबर है कि नहीं, आगे क्या फ्यूचर बनेगा कि नहीं, ये तो सर्वेंट का बेटा है, या ये तो वॉचमैन है, ये तो टैक्सी ड्राइवर है, और मैं देखो बड़े घर की, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं रईस घर की हूँ, है ना, मुझे ये सब लग्जरी लाइफ मिलेगा क्या, ये नहीं सोचेंगे, दे फ्लो विद द इमोशंस, दैट्स व्हाई शी रन अवे, बराबर है कि नहीं। सो दिस इज द इमोशनल प्रीडोमिनेंस, दैट मतलब जो डिसीजन है इज बाउंडेड विद द इमोशंस ओनली। हियर द सेपिया, इफ यू सी द सेपिया, the decision is bounded with the intellectual property और intellectually। अभी ये हमको रिप्रोडक्शन जब बताया ना मैंने, रिप्रोडक्शन वो क्या करती है रिप्रोडक्शन में, शी नॉट इन्वॉल्व और मेड विद द वन पर्सन, शी वांट अ स्ट्रॉन्ग out of all, so she met with the different peoples and find out the strongest sperm, for example strongest मतलब जो highly intellectual है, highly powerful है, and then fertilize with that sperm. This shows the quality of the intellectual predominance in the sepia. Are you agree with me? Yes, sir. समझ Yes, रहा sir. है ना? हाँ। Yes, sir. अभी इंटेलेक्चुअल साइड देखो, अभी वीक इमोशनल साइड देखो अपोजिट में, द कॉन्ट्रास्ट वीक इमोशनल साइड ऑफ द सेपिया, डाउन डाउन साइड ऑफ द सेपिया जो हम बोलेंगे, दिस सेपिया इज वेरी इंडिफरेंस टू द लव वन, जिसको पैर मतलब जिससे लव है, प्रेम है, उससे इंडिफरेंस हो जाएंगे। Indifference is that state where the person is love, प्रेम, भावना, ये सब रहता है, और कुछ ऐसा कॉज हो जाता है, they becomes blunt, they have developed the blunted emotion, they don't bother about the person whom she loved before. So indifference state, indifference to loved one, indifference to her children, indifference to the family, indifference to the family relation, indifference to even a parent, सब कुछ भी नहीं छूटा, aversion to family member, aversion to opposite sex, aversion to husband, aversion to music, even aversion to the pleasurable things, even censorious critical to parents, friends and relation, they become censorious, very critical to the close relation. See the weak emotional side of the sepia, where she developed the indifference feeling. Now, if you read or if you know the Madam Tyler का बुक है एक मट्रा मेडिका का, एम टाइलर, when I was in the third year or final year BHMS, I read the sepia from that book. तो मुझे अभी भी याद है, मैं भूल नहीं पाया, एंड दैट पिक्चर इज सिमिलर टू, मैंने एक पोस्टर बनाया ना ये सेशन का, आपने सभी ने देखे होंगे पोस्टर, तो पोस्टर में क्या दिया है, याद है आपको पोस्टर? पोस्टर याद है? You can see this poster where the lady is working washing the utensils, और ये लड़का देखो, एक लड़का ऐसे पड़ा हुआ है,
छोटा बच्चा रो रहा है, दूसरा भी रो रहा है, बोल रहा है मम्मी मुझे लो, है ना? दैट चाइल्ड वांट्स द केयर एंड लव, एंड दैट लेडी हु इज सीम्स टू बी ओवर टैक्सिंग, ओवर मतलब ओवर टैक्स हो गई है, थक गई है, एकदम हाईली वरीड, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे डिप्रेस, आंखों से थोड़ा पानी भी आ रहा है, मतलब, है ना? तो डजंट केयर अबाउट दैट चिल्ड्रंस कि क्या चल रहा है घर में। तो सेम पिक्चर यू कैन सी इन द मैडम टाइलर, कि सेपिया लेडी है, काम कर रही है, काम कर रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, बच्चे रो रहे हैं, है ना? किसी को भूख लगी है, मम्मी मम्मी, और हस्बैंड बाहर से आते हैं, तो बाहर से ड्यूटी से हस्बैंड आ रहा है तो उनको पानी देना चाहिए, बात करना चाहिए, स्माइल देना चाहिए, कुछ कुछ नहीं। शी डजंट फील्स एनीथिंग, देयर इज अ लॉस ऑफ अफेक्शन to the person on whom she loved before. This is the state of indifference. Now try to understand this कि ये indifference क्या होता है? See, indifference is the state. Try to understand this. It is not a disposition. It is comes after because of some elements from. अब ये कौन कौन से elements from है जिसमें लेडी इंडिफरेंस में जा सकती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना? इंडिफरेंस इज अ स्टेट, लाइक अ ग्रीफ, ग्रीफ इज अ स्टेट। मतलब ग्रिप में जिंदगी भर कोई नहीं रहता ना, इनबॉर्न ग्रिप में है और मरते वक्त भी ग्रिप में, ऐसा नहीं होता ना। मतलब लॉस ऑफ लव वन, या कोई पास का गया कोई चीज अब हमसे बिछड़ गई तो पर्सन ग्रिप में चले जाता है, हम ग्रिप में चले जाते हैं। इट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन पर्सनैलिटी। किसी का 2 दिन रहता है, 1 दिन रहता है, महीना भर रहता है, 2 महीना रहता है, 6 महीना, साल भर, और ही कम्स आउट ऑफ दैट। तो मतलब स्टेट रहता है, तो इंडिफरेंस इज ऑल्सो स्टेट, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। So this weak emotional side of the sepia, we can see the indifferenceness and aversion. And when and how this comes, even the aversion to domestic duty, indifference to domestic duty. Now, from the above all these rubrics, indifference, aversion, it is clear that the sepia doesn't have good relation with their integral associates or the close family member. Barabar. Now, this has the creative problem. This creates a problem on the skin. If there is a problem in the relationship, if there is a problem in the relationship, it affects the skin. If there is problem in the relationship, it affects on the skin, and how the sepia skin reflect, है ना? जैसे हमारा मन रहेगा, जैसे इमोशनल स्टेट रहेगा, वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा बॉडी पे। तो बॉडी पे कैसे रिफ्लेक्ट होता है? लाइक इन डिफरेंस टू लव वंस और द फैमिली, है ना? कैसे रिलेशनशिप में हम देखेंगे। अभी ये हमको अगर पूछना है पेशेंट से, वेदर दैट पर्सन, जो पेशेंट हमारे पास आता है, इज रियली अटैच टू फैमिली मेंबर और नॉट अटैच, और इट इज लाइक अ लाइकोपोडियम, it is like a fluoric acid or calcareous floor, कि there is there no attachment at all with the family member, और it is like a sepia, हम कैसे कि इंडिफरेंस में है, या बहुत केयरिंग और बहुत अफेक्शनेट है ना? बहुत बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत केयर वरीज बहुत है उसको। ये कैसे समझेंगे? फ्रॉम द हिस्ट्री और फ्रॉम द केस टेकिंग। तो we have to frame certain question, or we have to ask the question in that way, so that we can understand the attachment, the level of attachment, the level of care to the family member. What question we should ask? Anyone? To understand the relationship between, or how the state of the mind or attachment or relationship in the family member. The most important is here, we can ask in every case, if member of your family, like your child, father, mother, wife is ill, अगर कोई आपके फैमिली मेंबर अगर बीमार होता है, तो आप
आपको कैसा लगता है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको क्या फील होता है? आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप एंशियस हो जाते हो? इफ यू वांट द मोर क्लैरिफिकेशन देन, और यू कैन जस्ट आस्क कि आप कैसे, आपको कैसा लगता है, जनरल क्वेश्चन। उसमें देखना है कि वो रियली डिस्टर्ब होता है या उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब वाइफ बीमार है और ये अपना उठ गया, है ना, नाश्ता नहीं किया, मतलब नहाया, फ्रेश हो गया और बैग उठाया और चले गए। That male person doesn't bother about whether the wife is ill or what she need or not need because of that illness. और हो सकता है कि यार बहुत केयर, कैसे आए कैसे आए, क्या तकलीफ हो रहा है, फिर नाश्ता बनाएगा, खाना बनाएगा, हो सकता है छुट्टी ले, तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? डू यू पैनिक व्हेन योर फैमिली मेंबर फॉल सिक? ये थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर नहीं मिला कुछ तो यू, या आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज यू जस्ट आस्क कि फैमिली मेंबर अगर बीमार है तो आपको कैसा लगता है या आप क्या फील करते हैं। बराबर है कि नहीं? पीपल हु गेट पैनिक और वरीड, वेरी कंसर्न, और कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी वर्क etc will never be a sepia. Try to understand this. People who get panicky, पैनिक में चले जाए, और एंशियस, बराबर है? People becomes that person or lady become who is the very worried, very concerned, cannot concentrate on their duty or work. This probably cannot be a sepia. अभी there might be some question कि बात सेपिया क्यों नहीं, क्योंकि सेपिया में देखेंगे आप कि फर्स्ट स्टोरी में भी दिया है कि केयर्स वरीज अबाउट द डोमेस्टिक अफेयर, एंजाइटी डोमेस्टिक अफेयर, केयर्स वरीज। तो ये जो केयर्स वरीज और एंजाइटी है ना, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है। वो लव तो है सेपिया में, दूसरों के प्रति दिखता है सोरिक फेज में या साइकोटिक फेज में, बट अटैचमेंट नहीं है डीप। तो हो सकता है डॉक्टर के पास लेके जाए, बट इट इज नॉट सो मच वरीड विद द पर्सन, फैमिली मेंबर गेट इल। तो द सेपियर डू हैव एंजाइटी अबाउट देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली, बट द लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स देम इज मिसिंग। मतलब एंजाइटी रहेंगी, लव नहीं रहेगा, एंजाइटी रहेगी अबाउट देयर चिल्ड्रन। अरे क्या हुआ बा, है ना, क्या ये तकलीफ क्यों हुआ, बुखार क्यों आया, because they are lacking the attachment, they're not much bothered or much not much worried. That's why the, if you see the rubric affectionate, sepia is not there in rubric affectionate। कौन से रेमेडीज रहेंगे, जैसे हो सकता है नाइट्रम, इग्नेशिया, फॉस्फोरस, ऐसे रेमेडी है, आर्सेनिक है, पर सेपिया नहीं है। सो सेपिया यू कांट सी द इन द rubric of affectionate, है ना? बट अगर आप देखेंगे इनिशियली इन द सोरिक फेज, सेपिया हैज द एंजाइटी अबाउट द चिल्ड्रन, एंजाइटी अबाउट हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक अफेयर, राइट? That's why she developed, because of this over anxiety, she developed later on in the psychosyphilitic stage, sepia developed the delusion or the imagination that the members of the family become starved. Delusion that starve family member. Delusion starve family member. मतलब उसको ऐसा फीलिंग होता है कि बा मेरे फैमिली मेंबर को मतलब खाना पीना ही नहीं मिल रहा है ना, सब बंद हो जाएगा, बराबर है? विल स्टार्व, फैमिली मेंबर विल स्टार्व, राइट? नाउ वी हैव सीन, वी कैन सी द स्किन ऑफ द सेपिया। जो स्किन रिलेशनशिप देखा था ना अपन ने, जहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है सेपिया में, रूब्रिक्स थ्रू देखा था, तो उसमें क्या होता है, स्किन अफेक्ट होता है। अभी स्किन का रिफ्लेक्शन कैसे आएगा सेपिया पेशेंट में?
क्या क्या स्किन के डिसीज हो सकते हैं. The skin becomes yellow brown. Lot of cloisma or melasma you have seen in the sepia lady. बराबर है. आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इवन आवर लेक्चरर्स काफी क्लिनिकल टिप्स भी देते हैं कि मेलाज्मा इज अ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर मेलाज्मा क्लोइज्मा, जो वांग बोलते हैं ना मराठी में उसके. तो एक ही रेमेडी याद आती है पहले तो सेपिया. मतलब किसी को वांग वगैरह है तो सेपिया, है कि नहीं. डर्टी स्किन सेपिया में सिंगल रेमेडी रूब्रिक इफ यू सी द वाइन कलर डिस्कलरेशन, पर्पल कलर्ड हार्ड स्किन. That is, hardness is even more important or predominant feature in the sepia. You can see the group of warts, right? The sepia peoples develop the pellagra and it looks like this. बराबर. pellagra क्या है? It is a systemic disease where the skin is involved more predominantly, which is caused due to the deficiency of vitamin niacin, vitamin B3. And here you can see, because it is a systemic disease, you can see the 3Ds like dermatitis, diarrhea, and dementia in the deficiency of niacin. Because if we difficult to identify these such a cases where there is a vitamin deficiency, they goes into the complication if left untreated, and it may be a fatal. Right? So pellagra, where you see the skin condition, है ना, ब्लैकनेस दिख रहा है, हार्डनेस दिख रहा है, थिकनेस दिख रहा है, फिशर्ड टंग, फिशर्ड स्किन दिख रही है, डिस्क्वेमेशन एंड स्किन इरप्शन दिख रहा है. नाउ यू कैन सी, यू कैन correlate this with the appearance of the cuttlefish. It looks like that. You can correlate with the cuttlefish, this pellagra skin condition. Another pellagra skin condition, you can see the skin changes that occur in the pellagra, which is caused due to the niacin deficiency, right? This is called as a necklace eczema. The male, the person eczema है पूरा black ऐसे hard skin हो गया है ना, cracks भी दिख रहा है. It is called as a necklace eczema, which is characteristic in the sepia. The butterfly like appearance दिख रहा है ना नाक से ऐसे, ये saddle shape बोलेंगे उसको, saddle shape pellagra. Also a yellow saddle on the face. This is also predominant. This is again the predominant in the sepia. Just don't give directly, just think of when you see such a type of pictures or the skin condition. Right? Also, you can see there is a lot of destruction in the relationship or problem in the relationship in the sepia life that gives rise to a problem in the joints. The relationship again define the joints. Whatever. So there are the certain rubrics where the joint is involved and the sepia is the predominant remedy. Like ulcer over the joint, sepia is the predominant 4+ remedy. Ulcer over small joint, only the sepia is the remedy. The joint affection is very again predominant in the sepia remedy. You can think of sepia, this is all the generalities. You can think of sepia when you see or when any symptoms express with the hardness. मतलब जहां पे भी हो, कहीं पे भी हो, हार्डनेस अगर है, if any symptoms characterized by or any pathology characterized by hardness, you can think of sepia. That doesn't mean कि एक ही remedy है sepia, but sepia is the important remedy. If you see the hardness, you must think of sepia. Don't prescribe directly, but think of sepia. There are because the other remedy also.
तो हार्डनेस कैसा दिखेगा, मेंटली और फिजिकली? हम बोलते हैं ना हार्ड, तो मेंटली हार्ड कैसा रहेगा कोई पर्सन? इमोशंस नहीं रहेंगे ना वैसे, है ना? सो अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द नाइट्रोम्यूर एंड सेपिया, दो द इमोशनल पार्ट एक्टिव रहेगा सेपिया में, जैसे नाइट्रोम्यूर में रहता है, बट ही दे कांट शो और कांट एक्सप्रेस द अफेक्शन, जैसे बाकी लोग शो करते हैं कि मैं कितना प्रेम कर रहा हूँ, या मैं कितना प्यार कर रहा हूँ आपसे, या कितना अटैचमेंट है, दे कांट एबल टू शो. मोर इंपॉर्टेंट इज नाइट्रम देन द सेपिया. सेपिया रिजेक्ट द अफेक्शन ऑफ अदर्स, indifference to loved one, children, husband, family member, all. This shows the mental hardness. But inside there is a lot of sensitivity, which highlight through the rubric horrible things, sad story affects profoundly. Right? So this is the hardness where we can see, even the hardness we can see through the physical complaints. ये तो mental हो गया, right? Hardness you can see here where there is a peeling of the skin over the palm or the other skin area. There is a hardness of the skin. There could be a callosity formation, hard thick skin, hard pulpal skin, desquamating hardened pieces of the skin, where sepia is important remedy, graphitis is important remedy, and silicia is the important. And one of the other remedy for hardness and all this, like such a skin condition, is the petroleum. You can see the hardwarts in the sepia. Even the mucus discharge is also hard and dry. The sepia lady loves the hard bed instead of the soft. See the hardness. Loves hard bed amelioration. मतलब loves hard bed, which is get amelioration. The remedy is sepia rustox nitrate. Hardness amelioration. आपको याद आया होगा, देखो. There is a rubric or there is a symptom where the patient feels better by keeping hard things or sitting and firmly sit over the hard edges. And a back pain is getting ameliorated by sitting firmly over the hard things. ऐसे जैसे ये अभी चेयर है, या ऐसे कोई दीवार का कॉर्नर है ना, सर्कुलर कुछ ऐसे पिलर है, तो उसको फर्मली ऐसे जैसे प्रेशर आना चाहिए, ऐसे अगर बैठ के बैक पेन रिलीव होता है, दिस इज अगेन द सिम्टम ऑफ द सेपिया. अनदर रेमेडी इज द नाइट्रोम्यूर. See, the nitromure and sepia most of the time goes hand in hand. So these having the very complementary relationship. And most of the time we become confused कि जब नाइट्रोम्यूर आ रहा है तो सेपिया कम इमर्जिंग में आता ही है. इग्निशिया भी आ सकता है, स्टेफिसाइग्रिया भी आ सकता है, बराबर है कि नहीं? So the back pain leaning against something hard, amelioration, sepia is the remedy. Only one and only one remedy. That is the sepia. हम ये सिम्टम पर से भी रेमेडी दे सकते हैं सेपिया. बैक पेन लीनिंग अगेंस्ट समथिंग हार्ड एमुलरेशन, बट वो उतना पिक्यूलियर होना चाहिए. बैक पेन प्रेशर एमुलरेशन, बट प्रेशर कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए. हार्ड जैसे दीवार में हार्डनेस रहते है उससे, ऐसा नहीं कि पिलो से नहीं ये करेंगे. सी, पिलो के अगेंस्ट में नहीं लीन होगा या ऐसे बैठेगा और पिलो लेगा, उसमें हार्डनेस नहीं आता ना, वो सॉफ्टनेस है. वो पल्सिटिला, प्रेशर से पल्सिटिला को एम्ब्लोरेशन हो सकता है, पर सेपिया को हार्ड प्रेशर चाहिए, हार्ड चाहिए, हार्ड थिंग चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द रिलीफ. तो इट्स अ सेपिया. अगेन, any symptoms which is expressed through the rings or circle, any symptom which is in the circle form, especially the skin, or any pathology or lesion where there is a characterized by the circle or the ring, like eruption in the ring form, जैसे अर्टिकेरिया में भी हो सकता है, रिंग वॉर्म्स में होता है, हर्पेस सर्सिनेट में होता है, वार्ड्स में हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जो लीजन है उसमें हो सकता है, कैंसर के ग्रोथ में हो सकता है,
है ना, ऐसे। तो जहां पे हमको सर्कल दिख रहा है या रिंग फॉर्म में दिख रहा है वो पैथोलॉजी, लीजन या इरप्शंस, फर्स्ट थिंक ऑफ द सेपिया। दिस इज द सेपिया फीचर्स, थिंक ऑफ सेपिया। If pathology is around the mouth or around the opening or orifices like mouth, anus, nose, eyes, बराबर है, तो think of sepia. Again, this is a very additional information where most of the doctors, practitioners don't know about this sepia. This is hidden characteristic feature of the sepia. और ये कहाँ से लिया है सर ने, प्रफुल्ल विजयकर सर ने, इवन आई डोंट नो। रूब्रिक्स मैंने ढूंढने की कोशिश की पर एग्जैक्ट रूब्रिक्स भी नहीं मिला। So the physiological use of the sepia very important. Huh? Bad effects of playing with the potencies or dynamic of vital force, energy or stimuli. मतलब बैड इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग विद पोटेंसीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है, या इवन इवन डिफरेंट डिफरेंट ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है और केस पजल्ड हो गई है, देन थिंक ऑफ सेपिया in order to make the case clear. I think this is also given in the Kent or other pioneers book textbook, like a Kent lecture में भी दिया है शायद. Never well since the electric shock. Never well since the precious stone lockets or rings. Try to understand the meaning of this. See the how precise, sensitive और होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन है, हमको किस किस लेवल पे सोचना है। मतलब कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब जब से मैं वो ज्योतिष ने मुझे वो खड़ा दिया है, डायमंड दिया है या रिंग में वो ये खड़ा लगाने के लिए बोला है, जब से ये लगाया हूं मैं, जब से ये पहना हूं रिंग, तब से अजीब सा लग रहा है, मेरे बिहेवियर में चेंज आया है, ऐसे तकलीफ हो रही है, वैसे तकलीफ हो रही है। कोई लॉकेट किसी दरगाह में गया है, किसी मंदिर में गया है, तो कोई लॉकेट दिया है और मैं तब जब से पहन रहा हूं तो कुछ अजीब सा लग रहा है, देयर इज अ चेंज। तो सेपिया peoples are sensitive to even such a type of energy, है ना। ताईत लॉकेट जब से ये पहन रहा है तब से अच्छा नहीं लग रहा। नेवर वेल सिंस द वियरिंग अ ताईत, नेवर वेल सिंस होली वाटर। if you get such a patient and if you are able to interpret such information from the patient, think of sepia and give the sepia, because there is no other remedy like this, right? Because I have seen, or even the Dr. Praful Vijayakar sir narrate in their seminars कि पेशेंट अच्छा है, जैसे कैंसर की केस बताया था कि पेशेंट इंप्रूव हुआ, इंप्रूव हुआ, इंप्रूव हुआ है, अभी उसको एमआरआई के लिए भेजा है। एमआरआई करने के बाद पेशेंट फिर से डिटोरेट होने लगा और डेथ हो गया। व्हाई दिस? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एमआरआई मशीन affect the progress of the disease and patient goes into the worst condition, बराबर है कि नहीं? So this is, these things also happen, we have to understand the things this way also, right? So we can take the 2 minutes break here because it's a 1 hour complete. I see there is a few slide and even there is a trimasmatic, mathematica and sepia is, there is a lot of things in the sepia. It is not just 1 page or 2 page, 3 page, right? So take a 2 minutes break. We'll
So after a short break, again come to the sepia. Now this is the key feature what I want to highlight here of sepia, where it reflects a lot of things. That one word reflect the whole sepia. It is also described in the Essence of Mathematics, जैसे जॉर्ज विथॉल्कोस, Portrait of Mathematics by Franz Vermeulen, even the psychology book है, psychological understanding of each remedy, and a Philip Bailey, if you know, it has also described very well, very elaborately described the lot of drugs, जो polychrist drug है. We have to read that books also. Here the now the keyword that reflect the sepia is the stasis, relaxation. The second keyword is the indifferent. Second keyword is the indifferent. What is how we understand the stasis in the sepia? How we understand the stasis? Stasis मतलब क्या? जो रुक गया है ना? जो रुक गया है, जिसके कारण कंजेशन होगा ना, फिर स्टेसिस हो गया तो स्टैग्नेट हो गया है, बराबर है कि नहीं? आवाज येत आहे ना तिकडनं मला? बंद करा. नाही नाही, ते याचा आवाज येत आहे मोबाईलचा. So how we understand the stasis in the sepia? We can see the stasis at the different level. If you see the mental stasis in the sepia, then you can see the lot of confusion, dullness, absent-minded, and difficult thinking in the sepia. This is expressed through because there is a mental stasis in the sepia. है ना? Mental stasis. Emotional stasis मतलब indifferenceness, indifference. This is the example of emotional stasis of sepia. Intellectual stasis or mental stasis means confusion, dullness of mind, absent-minded, thinking very difficult, and indifference is the example of the emotional stasis. And even the sepia expressed through the physical stasis, physical stagnation, in the form of disturbances in the circulation or stagnation of circulation. Stasis of blood flow leads to varicosity, dilatation of vein. Now this dilatation of vein leads to varicosity, tortuosity of vein, varicose vein. Second example is the hemorrhoids, prolapse hemorrhoids, dilatation and tortuosity of the vein. This stasis leads to a constipation, hard stool, leads to the bearing down sensation. This stasis leads to the prolapse, relaxation of the muscles of organ, like a prolapse of uterus. Stasis of muscle leads to the flabby muscles and even the great lack of energy. Now, in order to counteract this all stasis and relaxation, you can see the sepia lady gets better by violent exercise. Sepia lady gets better by violent and vigorous exercise or motion. This is very characteristic in the sepia. You don't get this symptom in another remedy except the millefolium. The rubric is exercise, exertion, amelioration, violent and vigorous. The remedy is only two in the whole Matra Medica. The remedy is only two in whole Matra Medica. The predominant remedy is sepia and another remedy is the millefolium, which you usually think of when there is a profuse hemorrhage.
from the orifices like a uterus below in the form of menstruation, profuse, और the piles में bleeding ज्यादा है तो हम सोचते हैं ना तब, because it acts on the vein, है ना, and produce the hemorrhage, right? So in order to counteract this stasis, sepia needs a vigorous exercise or vigorous activity. That's why she is better with the vigorous activity. Now I have treated one patient with this rubric alone, where that case of girl who is I think around the 15 years old, 16, 17 years old, which was admitted in the AHMC. This is 10 years long back when I was joined the uh, lectureship in the AHMC, Antarvarti. So that time I have seen the OPD and IPD cases देखता था तब. तो IPD में एक लड़की admit थी who had an rheumatoid arthritis, which is the juvenile rheumatoid arthritis, where the joint is involved and a lot of मतलब severe था वो. Severe joint pain, severe swelling, rheumatoid nodules भी form हुए थे उसको. Child मतलब है ना, लड़की 15 साल की है. She can't able to perform their day-to-day activity even, but she likes to dance. और तब नवरात्र के दाभा में ऐसे पेंडॉल और ये प्रोग्राम चलते थे, या अभी भी चलते हैं मतलब, है ना. तो वहां पे डांस का प्रोग्राम था और पार्टिसिपेट करना था. तो इवन इन दैट इन्फ्लेमेशन, पेन एंड तकलीफ में उसने डांस किया एंड शी फील्स बेटर विद दैट. एंड व्हेन शी नैरेट कि ऐसा कि जब मैं डांस करती हूँ या विगरस ऐसा एक्सरसाइज या एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा दर्द नहीं होता है. तो I doesn't experience the pain or stiffness in the joint. I feel better, even mentally and physically. So I pick up this rubric, and the SEPIA was prescribed that time. And surely the patient was better. So this type of symptom is that much powerful कि जैसे हमारे जीटे बहू भी बोलते थे कि लाखातून एक सिम्टम है, मतलब कोई दूसरे मैट्रामेडी का मिलेंगे. तो हमको ये सोचना है, ये मेमोराइज करना है, ये समझना है. मोस्ट ऑफ द टाइम वही नो, हमको पता है कि ये रूब्रिक है, और हम उसको प्रैक्टिकली यूज ही नहीं करते. हम उसको प्रैक्टिकल उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए वो समझते नहीं, या पढ़ के भूल जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो इमेजिन करो कि पेशेंट ये कैसे बताएगा, ये पेशेंट में हम कैसे देखेंगे, पेशेंट में कैसे देखेंगे, बराबर है कि. Now the strongest feature according to the Kent, this is given, this is I have given from the Kent lecture, Kent Matra Medica, where the patient Kent said that key, this is one of the strongest feature of the CPI, that is the state of affection. The state of affection. To the great extent, the remedy seems to be abolish the ability to feel the natural affection, love, to be affectionate. That state is called as the indifference. मतलब ये रेमेडी है, पर्सन एबोलिश द एबिलिटी टू फील द नेचुरल अफेक्शन, नेचुरल लव, टू बी अफेक्शनेट. दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिफरेंस. An absence of all joy, inability to realize that things are the real, all things seem strange, no affection for the delightful things of the life. No joy, no joy. Life has nothing in it for her. This is the state of indifference. This is very nicely described in the Kent lecture Matra Medica. Right? So must see. Now, why this state of indifference comes in the sepia life? Why the sepia turns to indifference? What are the causative factor, emotional, physical, or whatever it may be? The most of the time, this condition comes after or during the confinement, during pregnancy, after confinement.
after uterine or other hemorrhages, after lot of or prolonged indignation. Indignation is the lot of anger where she can't able to express, though she feels मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों मिला, मैं क्यों सफर कर रही हूँ. So there is a lot of anger, anger for righteous thing, that is the indignation. So there is a lot of indignation. मैं क्यों सफर कर रही हूँ, मैंने तो सबका किया है ना, मैं सबके लिए लड़ रही हूँ, है ना, सब मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए जी रही हूँ, फिर भी मुझे लोग क्या दे रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है. So there is a lot of indignation developed in there which leads to the state of indifference. जाओ, अभी मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता. That lady goes into the indifference. Lot of sexual excess. Indifferent state maybe comes because of the sexual excess, where you can see the woman with over vigorous husband, where there is a sexual excess, lot of sexual activity against the will, where the patient is exhausted, there's a lack of energy, but goes through the lot of sexual activity, then might be the patient goes into the indifferent state. Nursing an over vigorous child, मोटा माटा, है ना, ओवरवेट चाइल्ड है, जिसको केयर करना या उसका नर्सिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है एक मदर के लिए, वो इज लीन थीन, है ना. तो caring for or nursing to over vigorous child is again the contributory causative factor for the sepia state to come, right? Now if you see during the case taking, the sepia, most of the time the sepia will cry during the consultation or during the case taking, and when she cry, all their suffering comes in their mind. अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, मैंने तो ऐसा किया था, मैं लोगों के साथ तो अच्छी थी, मैंने सबका भला चाहा, मैंने कितना केयर किया, मैंने कितना मेहनत किया, सुबह 4 बजे उठा दी, 4 बजे उठी, दिन भर काम 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 काम, लाइक लेबर, और मिला क्या मुझे. तो वो जब दुख पूरे सरफेस पे आता है, व्हेन द फिजिशियन आस्क द स्टेट ऑफ माइंड, और कैसे हो, क्या हो, या क्यों तकलीफ में हो, या क्यों ऐसा हुआ है, या आप ये स्टेज में क्यों आए हो, क्यों ऐसा बीपी बढ़ गया है, क्यों ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो शी स्टार्ट क्राइंग. द अनदर रेमेडी फॉर दिस is that where there is a patient is crying during consultation is the medurinum one, and second is the pulsatilla. I think even the kalikarb is also the remedy. Right? These things are we have seen. We can see the physical general of. See, only the understanding mental or studying the mental is not sufficient. We can identify or we can individualize the patient through the body and mind, and even through the particular pathology system, the changes that occurs at the organ or cellular level. Try to understand this. That's why only understanding the mind is not sufficient. Might be there are the cases where the physical generals are very, very predominant, which indicate the SEPI as the remedy, or whatever it may be, other remedy also. There might be some pathological changes which occurs, recurrent tendency to this, recurrent tendency to that, or where you can see the all the pathology where there is a stasis is there, where there is a stasis is there, where there is a relaxation of muscles or relaxation of organ, you can see in the form of prolapse piles, in the form of prolapse rectum, in the form of prolapse of uterus, right? So these theme or common pathology, it's called pathological general. ये कॉमन पैथोलॉजिकल जनरल क्या शो कर रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ द ऑर्गन पार्ट्स और टिश्यू और सेल. नाउ सी व्हिच रेमेडी कवर दिस.
This is also a way to prescribe, not necessary कि mind ही चाहिए करके. The SEPIA is the remedy, the relaxation, slowness of mind, stagnation of mind, slowness of mind. Slowness of mind, there are the other remedy also, especially the carbon group like graphitis, like carbovage, like calcarea, this sepia. But every remedy has the different shades and the different reaction to the sensitivity. So how this sepia? It's mostly a psychosyphilitic miasm. Speed is very slow, but the need of the sepia is the love, affection, and respect. It acts on the see the affinity of the sepia drug is acts on the venous circulation. That's why it acts on the portal system, female pelvic organ. It also acts on the skin, nerves, like this, right? The sepia lady usually is a chilly, very thirstless, है ना? पानी की याद ही नहीं आती, पानी पीती नहीं, don't feel like to drink the water, and mostly the left side is affected. Mostly the left side is affected in the sepia. So chilly, thirstless, and the left side affection you can see in the sepia. एलिमेंट्स फ्रॉम जैसे हमने देखा इसके पहले भी सेक्सुअल एक्सेस देखा था, लॉन्ड्री वर्क मतलब लॉट ऑफ हार्ड वर्क काम ही कर रही है. एलिमेंट्स फ्रॉम एसिड मतलब सावर फूड. दो द पेशेंट्स सेपिया क्रेविंग फॉर द सावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेविंग इन द सेपिया, क्रेविंग फॉर सावर थिंग, खट्टा 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 पसंद है, लाइक पिकल्स अचार, लाइक इमली. अनदर ड्रग इज द पल्सिटिला, सावर जिसको पसंद है ज्यादा. और सेपिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रेविंग है वो है सावर थिंग. तो इसको ज्यादा पानी पूरी पसंद रहती है. अभी इमली डायरेक्ट कोई खाएगा नहीं, मिलता भी नहीं है ऐसे. तो पानी पूरी पसंद है. तो कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे पानी पूरी पसंद है, तो अगेन यू हैव टू आस्क क्यों पानी पूरी क्यों पसंद है. क्योंकि उसमें खट्टा रहता है, खटास रहती है, मतलब मुझे खट्टा खट्टा पसंद है, सावर थिंग पसंद है, इसलिए पानी पूरी. पर अगर कोई बोलता है डॉक्टर साहब ने खट्टा मीठा रहता है, मीठा भी चाहिए और खट्टा भी चाहिए, ऐसा मिक्स चाहिए, इसलिए पानी पूरी चाहिए मुझे. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग द सेपिया, think of medurinum. Medurinum have the craving for khatta meetha both at the same time, huh? Mix. समझ गए कि नहीं? तो बोलेंगे नहीं भाई साहब, या वो गुपचुप वाले को बोलेंगे, पानी पूरी वाले को नहीं खट्टा मीठा चाहिए. बट द रेमेडी इज ओनली द वन खट्टा मीठा जो प्रीडोमिनेंटली बुक में दिखाया है, द मेडोरिनम इज द रेमेडी. एलिमेंट्स फ्रॉम मिल्क इन द sepia, even the aversion to milk. The complaints of the sepia is aggravated by or caused by the change when there is a changes in the hormones, like जैसे puberty में होता है, menstruation में होता है, abortion के बाद होता है, menopause में होता है, like that. Evening hour is most aggravating factor for the sepia. Caution, patient is aggravated by caution because there is an aversion to caution. Amelioration by the vigorous exercise and activity. And even the complaints get disappear. मतलब उसकी तकलीफ चले जाती है अगर वो विग्रस एक्टिविटी करती है, विग्रस. तो एक्सरसाइज अगर वो करेंगी जैसे सेपिया लेडी, तो ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे योगा करो, आसन करो. वो बोलेंगी नहीं मुझे जुम्बा करना है. मतलब जुम्बा में एक्सरसाइज ज्यादा विग्रस एक्टिविटी होता है ना. योगा में ओम करते बैठेंगे नहीं, उसको पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दिस डजंट गिव्स द रिलीफ मेंटली और फिजिकली. सो इवन द कंप्लेंट्स गेट बेटर in the sepia from the violent exercise or activity. The sepia lady, if you see the personality or physical makeup, she is the mostly a thin, wiry, and tall, like a model. दुबली पतली मॉडल जैसे हम देखते हैं ना, थीन वायरी टॉल विद द पॉइंटेड फीचर्स. नोज ऐसा पॉइंटेड रहेगा, चिन पॉइंटेड रहेंगी, बिकॉज देयर इज अ इमेसिएशन यू कैन सी, lack of fats you can see. Long fingers you can see, flat chested, even the chest is flat, which shows the lack of femininity.
there is a lack of femininity. The pelvic size also shows the lack of femininity and the flat chest. The lower lip swollen and cracks in the sepia. This is also important observatory symptoms. Lower lips is swollen in sepia and it is crack at the middle of the lip. It's a hungry and all gone sensation or empty sensation, even not relieved by the eating. There is a sudden prostration and bearing down sensation in the organ or in the orifice, like a prolapse of rectum. It is there is a bearing down sensation. That's why the sepia lady most of the time sit with the cross legs like this. Because the way the person sitting or the patient sitting is again important. This gives rise to an inner state of mind or the personality. How what personality they are. Might be some people's sit with the ankle over the other knee like this, right? Might be some people sit with the leaning backward or some people sit with the leaning backward. This shows whether these peoples are authoritative, dominating, whether these peoples are timid. This body language, understanding or reading the body language is again the important part in the prescription of the homeopathic Batra Medica in order to select the simillimum. Because this feature sometimes gives guide us to the final remedy. मतलब एक ग्रुप ऑफ रेमेडी आ रही है पर आप देख रहे हैं कि ये इसका क्रॉस लेग है या ऐसे बैठा है या ऐसे टिमिड पर्सन है ऐसे सामने आके बैठा है उसके टोन में थोड़ा सा एंजाइटी दिख रही है सो दिस फीचर ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट so that you can finalize the drug or you can prescribe the remedy on the basis of this with the help of this, right? Say having a lot of constipation, nausea, and the tendency to abortion, especially at the fifth to seventh month of pregnancy. Left-sided headache, especially useful even in the migraine. There is an aversion to sex, aggravation at the hormonal changes, inability to have the orgasm or frigidity. There is an insensibility. The sepia lady narrate that कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कुछ अराउजल ही नहीं होता या कुछ सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी नहीं होती जब हस्बैंड आता है तो मुझे ऐसे कुछ फील ही नहीं होता कि अप्रोच करना चाहिए इन्वॉल्व होना चाहिए वो तो हस्बैंड को बुरा नहीं लगना चाहिए हस्बैंड के मन के लिए मैं राजी हो जाती है बट आई डोंट एंजॉय दिस इज द वे द सेपिया लेडी फील और थिंक और नैरेट सो देयर इज insensibility of the sexual organ or there is a disgust or aversion to sex might be for this there is a indifferenceness of mind or indifferenceness of the body or there could be a past history of sexual abuse sexual excess or rape sexual abuse in the form of rape that gives rise to this aversion to opposite sex or aversion to sexual activity even even there is a painful question the patient becomes ill after question that's why there is aggravation after question or aggravation by question where the patient अच्छी है पर क्वेश्चन के बाद तकलीफ हो जाती है ब्लैडर अफेक्ट हो जाता है एब्डोमिनल कंप्लेंट्स डेवलप हो जाते हैं चक्कर आ जाता है मे बी देयर इज अनकॉन्शियसनेस व्हिच इज वेरी वेरी अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग क्वेश्चन कौन सी रेमेडी है the remedy is platina prolapse of uterus backache which is ameliorated by hard pressure like this if you see the acute totality of the sepia मतलब acute में अगर कभी देना है तो सी द पेशेंट एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगे दैट इज डल रहेगा चिली रहेगा थसलेस रहेगा द पेशेंट इन द acute doesn't
कंप्लेन, बिकम्स इंडिफरेंट। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम बोलता है ना, फैमिली मेंबर, जैसे मम्मी को लेके आई थी एक लड़की, तो डॉक्टर म्हणतात की, जैसे डॉक्टर ये इसको तकलीफ भी होती है, बताती नहीं है, चुपचाप ऐसे और दीवार की तरफ सर करके सो जाती है, मतलब बात भी किए तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, और कभी कंप्लेंट करती है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ करके। सो इंडिफरेंस इवन you can see in the during the illness, the patient easily goes into the indifferent state, does not complain. The another remedy in the acute state is the gelsemium, where there is indifference to the illness. Here you can see the indolence and aggravation by consolation. Person is sensitive to consolation, है ना, मतलब तकलीफ है, कंसोल कर रहे हैं तो चिड़चिड़ करेंगे, नहीं जाना, अकेला छोड़ दो, right? So this is the acute expressions of the sepia. Complementary, there is a relationship with the nitrosamine inimical to lachesis. If you have case spoiled by many remedies, मैंने इसके पहले ही बताया, CPI is one of the remedy to bring back the case. मतलब lot of medicine दिया है तो उसके बाद बोलते हैं ना, to clear the case, CPI is the remedy to prescribe. This is not the end actually. There is triamismatic Patramidica is there. I will go. I will go fast because most of the things पहले से complete हो गए. A triamismatically, why this is important to analyze the whole sepia into the three, that is soric sepia, psychotic sepia, and syphilitic, to understand the different stage and the phases of the remedy. हमको ये समझना जरूरी है कि ये सेपिया ये भी है, देखो, सेपिया इज वेरी एक्साइटेबल, सेपिया इज ओवर सेंसिटिव, वेरी एंशियस, एंजाइटी इतना ट्रिमेंडस रहती है कि क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला, even sensitive to noise, irritable, very competitive lady, sorry, very competitive child, hard working, like a female नक्सोमिका, जैसे फीमेल नक्सोमिका रहता है ना, फीमेल हाईली कॉम्पिटिटिव रहता है, वैसे ये फीमेल नक्सोमिका है सेपिया। मतलब वो सोरिक फेज में कैसे रहेंगे ना, सेंसिटिव रहेंगी, हार्ड वर्क करेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगी, हार्ड ड्राइविंग, मतलब व्हील पावर बहुत ज्यादा रहेंगे कि मुझे ये करना है वो करना है, एक्टिव रहेंगी, क्योंकि वो स्टैग्नेशन या स्टैसिस में नहीं जाएंगी। स्टैसिस में कब जाती है, साइकोटिक स्टेज में जाती है, ये सोरिक स्टेज है सेपिया। एंजाइटी एंड केयर्स फुल ऑफ, loves dancing, they love dancing because it gives the pleasure or vigorous exercise or vigorous activity. So this is the soric phase of the sepia, where the patient is having the anxiety, patient having the lot of competitive nature, there is irritability, sensitivity. If you get this picture with there is a physical general and all other features, then you can think of even sepia. नो मैटर कि वो साइको, अगर साइकोसिस में पेशेंट आई तो आप साइकोटिक स्टेज देखोगे, लाइक स्टैसिस, जैसे हमने देखे कि मेंटल स्ट्रेसिस है, इमोशनल स्ट्रेसिस और फिजिकल स्ट्रेसिस है, बराबर है कि नहीं? इसमें साइकोटिक फेज में कैसे रहती है सेपिया, इज वेरी इंडोलेंट एंड लेजी, लॉट ऑफ स्लगिशनेस, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम, कंसोलेशन एग्रावेशन, देयर वाज ग्रेट सैडनेस, मेलांकोली एंड वीपिंग एंड डिप्रेशन, सैडनेस ओवर one's health or domestic affair, and feels better when living alone. So there is aversion to company, like an attribute, becomes introverted and reserved like an attribute, dwells on the past things like an attribute, incommunicative, defensive, weeping while telling the symptoms, and just uncontrollable weeping without giving any information. मत रोते ही जा रही, कुछ बात ही नहीं कर रही, कुछ पता ही नहीं रही, सिर्फ रोना रोना आ रहा है। इवन देयर यू कैन सी द रूब्रिक, वीपिंग कॉजलेस, उसको पता ही नहीं मैं क्यों रो रही हूँ करके, बराबर है क्या? The female is, this sapient female is very sarcastic, very fault finding, very criticizing, very spiteful. मतलब sarcastic मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि टू वे से बोलना, मतलब जो बोलना है उसके अपोजिट बोलना, है ना?
तो सार्कास्टिकली लोग बोल देते हैं, मतलब ताने मारते हैं। इट इज लाइक अ ताने मारना, है ना। एंड इट हैज सेपिया हैज द टेंडेंसी, मतलब वो क्या करती है ना, कुछ भी तकलीफ हुआ तो अपने फैमिली मेंबर पे ढकल देती कि इनके वजह से ही हुआ है कर। दीज पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इलनेस, माई कंप्लेंट्स। और इजीली इजीली जॉयफुल नहीं होती, इजीली खुश नहीं होती, लाइक एन एटम, नॉट इजीली एक्सपीरियंस द जॉय। घर में प्रोग्राम भी रहेगा, फंक्शन में भी जाएंगी तो ऐसा मुंह ऐसा लटका रहेगा, नॉट इजीली गेट स्टिमुलेटेड टू हैव अ जॉय और पॉजिटिव इमोशन, रिक्वायर सम टाइम। एक बार सैड हो गई तो उससे बाहर आने में उसको समय लगेगा। वेरी इंडस्ट्रियस, वेरी हार्ड वर्किंग, बट एट द सेम टाइम इज वेरी ग्रीडी एंड माइजर, माइजर कंजूस भी है। अभी सिफिलिस, ये अभी अपन ने साइकोसिस देखा, अभी सिफिलिस सेपिया क्या है, सिफिलिटिक सेपिया। ये सिफिलिटिक मोस्टली स्टेट रहता है, स्टेट। ये डिस्पोजिशन रहेगा, ये भी डिस्पोजिशन है सोरा, है ना। पर ये सिफिलिटिक देखेंगे ना, ये स्टेट रहेगा, लाइक इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, टू लव वंस, टू फैमिली, टू फादर, टू मदर, टू ऑल, lacking emotions, despair of recovery, aversion to sex, no orgasm at all, no desire at all, denial of sexuality because of abuse of sexual, because of history of sexual abuse, right? There is a hysterical expression. Now hysterical मतलब कैसा आप कब बोलेंगे, because there are lot of hysterical remedy, these are the left sided, mostly the left sided remedy are the hysterical remedy, बराबर है कि नहीं। तो these are the hysterical remedy, where there is a hysterical कब बोलेंगे, when the person react to the out of proportion, it is not like कि anger या rage, it is also depression। अरे बात तो छोटी सी है ना, और ये इतना डिप्रेस हो गई, ये इतना निगेटिवली ले रही है, ये इतना पेसिमिस्टिक हो गई है, सैड हो गई है, मेलानकोलिक हुई है। सो द थिंग्स आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन आउट ऑफ, या हम बोलेंगे आउट ऑफ कंट्रोल, इवन द रेज आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ इमोशंस आ गया, वो बेहोश हो गई, इमोशंस आ गया, इतनी ओवर रिएक्ट कर रही है, इतनी ओवर रिएक्ट कर रही है, तो सबको लग रहा है अरे इसको क्या हो गया। सो द हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन यू कैन सी, दिस इज द सिफिलिटिक, है ना, दिस इज सिफिलिटिक सिम्टम। एट द लास्ट, एट द लास्ट व्हेन द थिंग्स गेट, मतलब जब बोलते हैं ना कि एक लिमिट खत्म हो जाती है ना, कि सेपिया लेडी कर रही है, कर रही है, दूसरे के लिए जी रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, तो उस ऐसे स्टेट में चली जाती है, वेयर द रूब्रिक्स comes is the handle things anymore cannot, overwhelmed by the stress of housewives, हैंडल थिंग, बस हो गया, वो अपने घुटने टेक देती है, सरेंडर कर देती है, रिजाइन कर देती है। दिस इज अ सिफिलिटिक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ द डिस्पेयर, कि बस हो गया, अभी नहीं होगा, कितना करूं मैं, कितना करूं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ डिस्पेयर, स्टेट ऑफ डिस्पेयर विच गिव्स राइज टू अ रूब्रिक, हैंडल थिंग्स एनीमोर कैन नॉट, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मेरे से होगा ही नहीं, माइंड में सोच लेती है, रिजाइन कर देती है, ओवरवेल्म बाय द स्ट्रेस एंड हाउसवाइफ, राइट। इनडिफरेंस एपैथी लाइज विद आइज क्लोज, घर में क्या चल रहा है आंख बंद करके, सब पता है उसको क्या है, मतलब एक्टिविटी पर ऐसे दिखा रही है कि कुछ भी नहीं पता उसको, लाइज विद आइज क्लोज। फ्रॉन डिस्पोज, फ्राउनिंग रहता है ना ऐसे, फ्राउनिंग अगेन इज अ सिफिलिटिक एक्सप्रेशन बिकॉज इट इंडिकेट द इंटरनल ग्रीफ या internal displeasure. This frown indicate the internal displeasure and despair. That's why it is a syphilitic expression, frowning. Another important delusions I have seen here in the sepia. See, delusions are not
always a syphilitic, frank syphilis. It may be psychosyphilitic or syphilis, depends on the content of delusion. So you can see the delusion of deprivation. ये डिप्राइव डिल्यूजन है सब, तो ये साइकोसिफिलिस में आता है। जैसे डिल्यूजन पुअर ही इज, तो पुअर मीन्स समथिंग इज लैकिंग, नॉट फुलफिल, देयर इज अनफुलफिल्ड, समथिंग इज लैकिंग इन मी। डिल्यूजन स्टार फैमिली विल, कि फैमिली को भूखे मरना पड़ेगा, बेचारे फैमिली भूखे मर जाएंगे, फैमिली मेंबर भूखे मर जाएंगे, उस खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो देयर इज अ स्टार। एंड डिल्यूजन रॉब गोइंग टू बी, मतलब चोरी होने वाली है, कुछ लूट के लेके जाने वाले, तो ये डिप्राइविंग डिल्यूजन है। Why this ungrounded and unsupported? Because why they feels, why these delusions develop in the sepia? Because they feels ungrounded and unsupported. क्योंकि उसको लगता है कि किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और फाइनेंशियली तो स्पेशली फाइनेंशियली, their inability to survive financially in the world. That's why develop this such a type of depriving delusion. This is called as the delusion of deprivation. Another delusion is the feeling of unfortunate he is. That's delusion. Unfortunate he is. हा वो म्हणते किती दुर्दैवी, किती नशीब खराब, कितना नसीब खराब है मेरा, है ना, वेरी अनफॉर्चुनेट टू लाइव, है ना, there is a, develop the despair and loathing of life because of that. This is because of the feeling of abandonment or feeling of depression and failure in the life. Because of this, they develop the delusion like delusion of unfortunate, right? Like this, there are the different single remedy rubric. This is also a good way of understanding the remedy by the rubrics, which is core of that, which is very important. Affection reject. This is also a way of indifference. Affection reject. Amusement nothing gives him. मतलब किसी बात से खुशी नहीं मिलती उसको. Never amuse. है ना, इसके पहले भी देखिए ना, तो वो खुश नहीं हो पाती, फंक्शन में भी जाएंगे तो खुश नहीं हो पाएगी, वो उनके फ्रीक्वेंसी में, आगे वाले फ्रीक्वेंसी के मूड के फ्रीक्वेंसी में अपना फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पाएगी। इट रिक्वायर्स द टाइम। दैट्स व्हाई ही डेवलप द डिल्यूजन्स, दैट इज द डिल्यूजन अनफिट फॉर लाइफ, loathing of life and unfit for life. Then there is again syphilitic, highly syphilitic rubric, despair, existence about miserable, निराश 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 इतना कि बस हो गया अभी, कि अभी ये अस्तित्व अभी होना ही नहीं, loathing of life, that gives rise to this state of mind, that is the despair, existence about miserable, ये दुखी जीवन, ये तकलीफ वाला जीवन, इससे एकदम निराश हो जाना, बस अभी रहना ही नहीं है, ये एग्जिस्टेंस ही गलत है ना, लाइफ ही नहीं चाहिए, बराबर। So these are, you can study this rubric and you can search, है ना, ये तो this is my compilation or notes, you can say, कि हर रेमेडी का सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स को मैंने सर्च किया है और उसको कंपाइल किया है, so that we can understand the syphilitic state of mind of the sepia or each and every drug, psychotic state of mind of the each and every drug, and soric state of mind. तो सोरा जो रहता है वो तो डिस्पोजिशन बोलेंगे, नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, डिस्पोजिशन, बट सिफिलिटिक मोस्टली अ स्टेट. So I think you know the disposition and state very well. So the core, if you see, though the CPI is sensitive, CPI is hardworking, competitive, it easily goes into the indifferent state where there is a lot of stasis and prolapse and relaxation. You know, you can correlate the mind with the body. है ना, तो बॉडी क्या बोल रही है, जो माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बॉडीली एक्सप्रेशन और सिम्टोमेटोलॉजी और डिसीज पैथोलॉजी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड पैथोलॉजी और मेंटल पैथोलॉजी. दैट्स व्हाई हमको डिसीज को ठीक करने के लिए माइंड को पढ़ते हैं, क्या माइंड में क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या कंफ्लिक्ट डेवलप हुआ है,
या कहाँ पे कॉजेशन आने के बाद स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ है, वहां जहाँ कहाँ सेंसिटिविटी हर्ट हुई है, कहाँ नीड फुलफिल नहीं हुई है। सी सेंसिटिविटी हर्ट हुई है और नीड फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे एवरी पर्सन और पर्सनालिटी और रेमेडी हैज द डिफरेंट डिफरेंट नीड, अगर वो नीड फुलफिल नहीं होती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट। मतलब किसी का नीड है लव, अगर लव अफेक्शन नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। किसी का नीड है सिक्योरिटी या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, तो जब डिसरिस्पेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लाइक अ स्टेफिस एग्री, नीड इज द रिस्पेक्ट, 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 बराबर है कि नहीं? किसी का रिस्पेक्ट सिक्योरिटी है, डिपेंडेंसी है, तो वो नहीं मिलता, मतलब जिस पे डिपेंड है वो चले जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। या सिक्योरिटी नहीं, जो सिक्योरिटी थी वो अगर चले जाएंगी, दूर चले जाएंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एनी हाउ नहीं रहेंगी, देन द कंप्लेंट स्टार्ट। लाइक अ कलकिरिया, कलकिरिया पर्सन डिपेंड ऑन समथिंग, डिपेंड ऑन, इज डिपेंडेंट पर्सन, इज द इनसिक्योर पर्सन। तो सिक्योरिटी के लिए वो कुछ ना कुछ देखता है, पर्सन देखता है, गोल्ड देखता है, मनी देखता है। तो जब लॉस हो जाता है, मतलब कलकिरिया अगर है, पर्सन है, क्लार्क है या बॉस है, या बॉस भी नहीं, एक पर्सन है, उसके नीचे अगर कोई काम कर रहा है बंदा, जहाँ पे वो उस पर डिपेंड हो जाता है, दैट बंदा इज द सिक्योरिटी फॉर दैट कलकिरिया पर्सन, और वो चले गया, उसका जॉब चेंज हो गया या उसने छोड़ दिया, तो सब बर्डन इसके ऊपर आता है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है? तो लाइक दैट तो एवरीवन हैज द डिफरेंट डिफरेंट sensitivity, different different need, we have to assess, we have to understand that, right? So I think this is the sepia enough to understand. Okay, so thank you very much.